think we are live. I'm gonna test my mic, so I'll read something. Maybe I should be up at 1:30. Oh, I should sleep at 1:30 and I should be up at 8 o'clock. This is enough. Hmm, new problem. Okay, I've started the game. अभी देखते हैं माइक कैसा आ रहा है. Most probably it should be fixed क्योंकि मुझे लग रहा है it's an issue with पता नहीं. Or I'll try to turn off my headphone and then I'll try again. Okay, I've started the game. अभी देखते हैं माइक कैसा आ रहा है. Hey भगवान, it's basically the mic problem. I have no idea how it is happening. Basically, I think गेम शुरू करने से कुछ टाइम पहले ही हमें तो बेसिकली आई थिंक गेम शुरू करने से पहले ही हमें एक बार टेस्टिंग करना पड़ेगा और गेम को ऑन करते ही वॉइस फिक्स हो गया. तो देयर इज समथिंग रॉन्ग. ठीक है, इट डजंट मैटर. सो सो बेसिकली आई वांटेड टू डू दिस वीडियो. आई मोस्टली हैव टू कट द वीडियो इन द स्टार्ट ताकि वो जो भी डिस्टर्बेंस है जो भी टेस्टिंग था वो ना आए. सो द रीज़न आई वांटेड टू डू दिस वीडियो इज़ बेसिकली हाउ आई सेट अप द होल स्ट्रीमिंग का थिंग. आई हैव ऑलरेडी डन मल्टीपल टेस्टिंग. काफ़ी बार टेस्ट कर चुका हूँ. एंड लेट मी क्विकली. सो वन सेकेंड. आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट और एनीथिंग रेडी. मुझे नहीं पता बाकी यूट्यूबर्स लोग कैसे कर रहे हैं अभी, बट ठीक है. तो आई विल स्टार्ट विद व्हाट आई एम यूजिंग फर्स्ट. तो सबसे पहले आई एम यूजिंग सॉफ्टवेयर क्योंकि सो बेसिकली आई ट्राइड मल्टीपल थिंग्स की इफ सम सो बेसिकली आई हैव अ मैकबुक और मेरे पास एक आईपैड है. आई एम प्लानिंग टू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स जिसमें से देयर इज PS5 एंड देयर इज Oculus एंड देन देयर इज दिस आईपैड विद M2 चिप. प्लान था कि काफ़ी सारे गेम्स खेलेंगे बट फॉर नाउ आई यूज टू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स फ्रॉम PS5 बट उसको स्ट्रीम करने में either you can use a hardware and then you can connect your PS5 with that particular hardware which is basically a video capture card and then you connect that video capture card with the MacBook और उसके बाद आप स्ट्रीम कर सकते हैं flawlessly. अच्छी स्ट्रीमिंग मतलब 2K 4K whatever your हार्डवेयर सपोर्ट्स. लेकिन आई रियलाइज्ड कि उसमें काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा और वो बजट अभी नहीं है. तो वाई नॉट स्टार्ट विद समथिंग जो कि ऑलरेडी चल रहा है, जो कि ऑलरेडी मैं खेल रहा था विद माई फ्रेंड्स एंड ऑल. दैट इज़ बेसिकली BGMI. तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल कि अभी ओपन कर रखा है मैंने. सो BGMI के साथ सीन क्या है कि वो ऑब्वियस सी बात है iOS में चलेगा और उसके लिए आपके पास आईफोन या फिर आईपैड चाहिए. मेरे केस में आईपैड क्योंकि मैं आईपैड ही यूज़ करता हूँ एंड आई प्रेफर प्लेइंग फाइटिंग या फिर जो भी बोलते हैं बैटल ग्राउंड्स बड़ी स्क्रीन पे इंस्टेड ऑफ छोटी स्क्रीन पे ऐसे घुस कर. नो ऑफेंस टू ऑल दिस पीपल हु आर प्लेइंग राइट नाउ बट उसमें क्या होता है कि काफ़ी देर तक आप आंखों को देख के लगे रहते हो तो आपको बहुत बारीकी से बहुत ही केयरफुली देखना पड़ता है सब कुछ. बट इस केस में मुझे हमेशा से था कि इवन जब PUBG आया था मोबाइल में तो आई यूज टू प्ले इन द PC ओनली. बट कटिंग एवरीथिंग दिस ऑल क्रैप शॉट. आई एम ट्राइंग टू प्ले विद माई BGMI on my iPad and now there are two ways to stream whether you can connect a video capture card with your iPad and your MacBook and then you can use a software like OBS or any streaming software like Streamlabs. बहुत सारे हैं. DOUWN आई गेस डाउवन बोलते हैं उसको. तो आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई हैव ट्राइड Streamlabs, आई हैव ट्राइड डुवन जो भी नाम है उसका. डुवन इज पेड, Streamlabs फ्री है और एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड SC Live. आई गेस दैट्स बेसिकली फ्रॉम स्ट्रीम एलिमेंट्स. इट्स अदर कंपनी. तो इन सब के साथ टेस्ट किया है. सम हाउ इवन परचेज थिंग्स लाइक
बेसिकली आपको उस आईपैड को कनेक्ट करने के लिए मैकबुक से यू नीड समथिंग। तो जैसे कि मे बी आपको पहले अपने आईपैड, बिकॉज M1 Pro या फिर जो भी मैकबुक आईपैड जो आईपैड प्रो सीरीज है उसमें टाइप सी मिलता है आपको। तो यू नीड बेसिकली समथिंग जिससे आप टाइप सी से आउटपुट ले सको, और एंड देन यू बेसिकली पुट दैट आउटपुट समवेयर अपने मैकबुक या जो भी आप से डिवाइस यूज़ करोगे। इट कैन बी विंडो पीसी एज वेल। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे केस में विच इज़ मैकबुक, आई डिड ट्राई टू टेक आउटपुट, जो कि एक मैंने टाइप सी केबल लगाकर एक बेसिकली टाइप सी हब मैंने परचेज किया था, दैट वाज फ्रॉम स्पाइजन। वो आपको मल्टीपल कनेक्टिविटी करने देता है। आई डोंट थिंक आई हैव इट राइट नाउ, और आई कैन शेयर माई स्क्रीन। छोड़ो, पुट द टाइटल्स। लेट मी चेक वन थिंग, वाई डू आई फील लाइक कि मेरी स्क्रीन हाफ कट हो रही है। इट इज़ ठीक है, छोड़ो। तो बेसिकली आई डिड ट्राई कि स्पाइजन जैसे हार्डवेयर को, स्पाइजन के पास एक है 5 in 1, देर इज 6 in 1, देर इज 8 in 1 आई गेस। तो स्पाइजन आपको टाइप सी हब देता है, तो यू कैन जस्ट बाय दैट हब। आप उसको अपने टाइप सी आईपैड में कनेक्ट करो, एंड देन यू टेक, और उसके अंदर एक एच डी एम आई 4K 60 FPS के लिए भी ऑप्शन था। तो बेसिकली आई थॉट कि आपका टाइप से जाएगा आपके आईपैड में, एंड देन आपका जो हार्डवेयर है उसमें से जो स्पाइजन का हब है उसमें एच डी एम आई लगेगा, एंड देन उसका एच डी एम आई का दूसरा एंड जाएगा आपके वीडियो कैप्चर कार्ड में, या फिर मतलब बेसिकली वीडियो कैप्चर कार्ड में। और आपके पास एक वीडियो कैप्चर कार्ड भी होना चाहिए, दैट मीन्स, एंड दैट वीडियो कैप्चर कार्ड इज अगेन इंटरनेट पे मिल जाएगा। देर आर मल्टीपल लाइक एलगैटो वगैरह के भी आते हैं जो प्रॉपर मतलब स्ट्रीमिंग डेक होते हैं, या फिर यू कैन सिंपली गो फॉर अ सिंपल जो कि आपको 30 FPS या 60 FPS दे दे एटलीस्ट, या 2K 4K या दे दे। तो आई ट्राइड, देर इज दिस कंपनी कॉल्ड, डोंट रिमेंबर विच वन आई बॉट, लेट मी जस्ट चेक एक बार। न्यू टैब, अमेजोन। आई एम नॉट शेयरिंग माई स्क्रीन, आई एम जस्ट स्पीकिंग हेयर। तो आपको मैं बस बता देता हूँ कि विच वन आई ऑर्डर्ड। ओ यस, वेवलिंक। यस, तो वेवलिंक का मैंने ट्राई किया था। वेवलिंक इज़ अ मतलब नॉन कंपनी आई वुड से, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं उसको देख रहा हूँ, और काफ़ी टाइम से उसके मैं काफ़ी हार्डवेयर को देख रहा हूँ जो कैप्चर कार्ड के अराउंड भी काम करते हैं। तो मैंने एच डी एम आई लिया, उसको कन्वर्ट किया कैप्चर कार्ड से वेवलिंक के कैप्चर कार्ड्स में। तो बेसिकली वो एच डी एम एज इनपुट लेता है, एंड देन वो आपको अलाउ करेगा वेदर यू एस बी और अ टाइप सी। तो यू एस बी के ऊपर वो टाइप सी का एक एक्सटेंशन है, और यू कैन से एक्सटेंडर है, और वो आपके फिर मैकबुक में लग जाएगा इन केस ऑफ मैक। प्रॉब्लम क्या है कि उसके बावजूद भी वो काम नहीं किया। मुझे नहीं पता क्यों। आई एम प्रिटी श्योर कि आई एम मिसिंग आउट समथिंग, या फिर सो बेसिकली इन ऑर्डर फॉर दैट वीडियो कैप्चर कार्ड टू वर्क, यू नीड ऑल्सो डिस्प्ले लिंक का ड्राइवर। तो डिस्प्ले लिंक इज़ अ कंपनी जो कि कुछ करती है पता नहीं, बट उसके पास एक ड्राइवर है जो कि आपको डालना पड़ेगा शायद मैक में। इफ़ आई रिमेंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो डिस्प्ले लिंक आपको अलाउ करता है यू नो डिस्प्लेज एक्सटेंड करने के लिए इन टर्म्स ऑफ मैक। तो बेसिकली एग्जांपल ले लो कि जो M1 सॉरी जो मैक के इंटेल चिप्स हैं, आई थिंक इंटेल चिप्स या फिर मैक का, आई डोंट रिमेंबर कौन सी सीरीज़ है, बट मैक के किसी एक सीरीज़ में आप एक से ज़्यादा मॉनिटर कनेक्ट नहीं कर सकते। समहाउ वो एक से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, वो अलाउ नहीं करता, वो उसमें कुछ है हार्डवेयर लिमिटेशन है। आई थिंक वो इंटेल चिप का ही शायद हार्डवेयर लिमिटेशन है। हाँ, आई गेस सो। तो उस केस में, और पता नहीं जो भी है इंटेल का है या फिर M1 का है, बट वो हार्डवेयर लिमिटेशन है उसके अंदर। तो बेसिकली आई रिमेंबर मैं काम कर रहा था, आई वर्क विद मल्टीपल मैक के लैपटॉप्स, तभी मुझे याद नहीं आ रहा कि इट वाज इंटेल चिप और हार्ड M1 चिप। बट उसमें बेसिकली एच डी एम आई का ऑप्शन नहीं था, तो आई एम प्रीटी श्योर कि इट वाज अ लो सीरीज वाला मैक ओनली। अब उसमें क्या था कि इन ऑर्डर टू एक्सटेंड वन मोर डिस्प्ले, आपको यू नीड अ हार्डवेयर एंड प्लस समथिंग ड्राइव सॉफ्टवेयर बेसिकली विच विल अलाउ यू टू एक्सटेंड दैट डिस्प्ले। तो वो था बेसिकली हमारा डिस्प्ले लिंक का सॉफ्टवेयर। तो डिस्प्ले लिंक के साइट पे जाओगे, आप चूज़ करोगे वहाँ पर, तो आपको अलाउ करेगा। अगेन आई कैन बी रॉन्ग अबाउट दीज थिंग्स, बट ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है बेस्ड ऑन द रिसर्च आई डिड व्हेन आई वाज ट्राइंग टू एक्सटेंड माय display of Mac, whether it was Intel or it was M1. But yes, going coming back to अपना current setup. So basically now there is iPad, Type C hub लगाया उसके अंदर, Spygen का लगाया था, and from in that hub I have injected a HDMI port or HDMI का cable, and the other end was connected to the video capture card which was from Wavelink, and then that video capture card was connected into by extending it to Type C, and it was connected to the MacBook. तो इस तरह से पूरा सेटअप चल रहा था, बट काम नहीं किया। देन देर वॉज दिस वीडियो विच आई वॉच्ड ओवर इंटरनेट। सेकेंड ट्राई जो मैंने किया वो दैट वाज बेसिकली यू टेक दिस थिंग,
एक केबल जिसका एक एंड बेसिकली आपका USB हो and second tank basically type C, and then you convert your this what do you call it, this type C ka in your iPad and the other one to your MacBook or whatever device you want to connect. If you have a MacBook, because MacBook के पास USB नहीं होता, तो you basically convert that again with with something, some extender or something जो कि again type C बना दे इसको USB को. In using that way, आप OBS के अंदर एक फीचर होता है जिसे कहते हैं, अब जैसे OBS के अंदर जब तुम सीन सेटअप करते हो एंड व्हेन यू चूज व्हाट यू वांट टू कैप्चर, इट कैन बी अ विंडो, डिस्प्ले, मीडिया वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, आई थिंक मोस्ट लोगों को पता होगा. उसमें एक होता है वीडियो कैप्चर का ऑप्शन होता है. तो दैट इज बेसिकली मेंट, अभी तक की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज बेसिकली मेंट टू कनेक्ट सम एक्सटर्नल कैमरा और सम वीडियो हार्डवेयर, वीडियो कैम हार्डवेयर, जिससे आप वीडियो का इनपुट ले सको सिंपली. तो बट using that, I think people can also use that whole connection to take input from a iPad of a screen वगैरह वगैरह. तो जैसे मेरे केस में मैंने क्या किया कि जब मैंने उसको टाइप सी को कन्वर्ट किया यहाँ पर मैक में और उसको उधर ले गया मैं, तो उस केस में मैं बेसिकली iPad की स्क्रीन को वहाँ पर ला पाया. दैट वाज गुड. I tried that with Streamlabs, with SC Live, OBS वाला सॉफ्टवेयर, एंड देन OBS itself, the official one. बट सभी के केस में प्रॉब्लम क्या हो रहा था, एक तो मुझे 1080 पे 60 FPS नहीं मिल रहा था, अगर मिल भी रहा था तो बहुत ज़्यादा लैग आ रहा था. हमने कई टेस्टिंग की है, मतलब मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड पीयूष विश्वास, इफ़ यू आर लिसनिंग. तो हम लोगों ने काफ़ी सारी टेस्टिंग किया, वो देख के बता रहा था फ़ोन पे कि नहीं आ रहा, सही आ रहा, नहीं आ रहा, सही आ रहा. एंड आई kept टेस्टिंग with multiple settings within the OBS, within SC Live, within Streamlabs. तो काफ़ी सारा ट्राई किया. नहीं चला, मतलब चला बट वही है कि आपको लाग दिखेगा काफ़ी सारा. फिर मैंने पीयूष के कहने पे डोवॉन चेक किया. डोवॉन में प्रॉब्लम क्या था कि पहली बात आपको पे करना पड़ेगा, अगेन जस्ट लाइक स्ट्रीम चैम्प आपको पे करना पड़ेगा उसको, उसका प्रीमियम, उसका वाटर मार्क वगैरह हटाने के लिए. एंड देन वंस यू डू दैट, इट्स वेरी फास्ट, इट्स वेरी कूल. मतलब यू जस्ट कनेक्ट योर iPad, इट इमीडिएटली डिटेक्ट्स कि ओह समथिंग इज कनेक्टेड, और वो आपकी स्क्रीन वहाँ लाइव कर देगा, मतलब आपकी स्क्रीन, आपकी डिस्प्ले वहाँ पर आपके मैक में या फिर आपके पीसी में शो करेगा. दैट्स अ गुड थिंग. बट अगेन जब मैंने उसको ऑब्वियस के अंदर कैप्चर करके लाइव किया, तो अगेन सेम लैग वाला इशू था, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं था उसके अंदर. आई वॉज एबल टू गेट 1440 आई गेस. बट जो लैग वाला प्रॉब्लम था वो था. अब there is a possibility that when I was doing that with my OBS and the USB वाला connection, USB and Type C वाला connection, maybe my cable is not that good one or high quality or something which doesn't transfer that much of data कि एक बार में कि वो proper कर पाए. लेकिन my understanding is कि अगर OBS या SC Live आपके iPad की स्क्रीन प्रॉपरली वहाँ दिखा पा रहा है, तो उसको स्ट्रीम भी कर पाना चाहिए प्रॉपरली. लेकिन अगेन अभी बिकॉज इवन आई डोंट अंडरस्टैंड डिटेल्स ऑफ हाउ एक्चुअली थिंक दीज थिंग्स वर्क्स टेक्निकली डीप डाइव, बट एक हाई लेवल पे तो यही होना चाहिए. एंड देन ऑल्सो I think that's a limitation of my MacBook somewhere, or I'm not able to properly use the CPU का पूरा uses, और जो भी उसके अंदर enable करेगा इस पूरी स्ट्रीमिंग को. मे बी दैट्स वाई वो स्ट्रीमिंग जब वो डेटा स्ट्रीम कर रहा था इंटरनेट पे, तो वो सही से स्ट्रीम कर नहीं पा रहा था, प्रॉपर एफपीएस नहीं मिल रहा था मेरे को. ठीक है, कमिंग लीविंग ऑल दैट, आई इनिशियली स्टार्टेड विद द सॉफ्टवेयर कॉल्ड स्ट्रीम चैम्प, जो कि एंड में मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, एंड दैट्स द मोस्ट बेसिक वन. यू जस्ट नीड टू एक बार गेट अ होल्ड ऑफ इट कि कैसे यूज़ करना है, एंड देन इट्स वेरी फ्लॉलेस, मतलब एकदम बढ़िया चलता है. तो अभी इफ़ यू सी माई करंट सेटअप, which is basically, one second, yep, let me just check if everything is going fine. नहीं तो मैं बोलता रहूँगा और बाद में पता लगा कि सब बेकार हो गया. Yep. So अभी this is my current setup which you see on the screen right now, where there is a banner on the right and there are so many things. This I'll demo. So if I go quickly back to my stream का software, तो ये एक आपको screen दिखा रहा है, again you have to buy it so that you can remove the water, and then उसके अंदर कोई कुछ ऐसा डिस्प्ले दिखेगा जिसमें there will be something on the right side and there will be something on the left side. It's a video, and then right at कुछ है. If you click on mode, you will see set options mode, जैसे video, right, advanced, horizontal or turbo. Turbo I have used, it says for all devices, which made sense, and I thought कि वहीं पे करना है अंदर.
वीडियो लेफ्ट में मतलब वीडियो लेफ्ट में का वीडियो राइट में मतलब है कि वीडियो will be on right. In our case it is left, you see that on screen only. Advanced में do a lot of things जो कि enable कर देते हैं ये, मुझे कुछ खास दिखाई नहीं। बाकी अगर है ना, अगर if you ask me, you just go the video left वाला thing then just phone में रहता है तो ऐसे वो थोड़ा ऐसे देखना है ना कि यार इससे फर्क पड़ता, डिपेंड who is watching। तो मेरे केस वीडियो लेफ्ट था, राइट साइड पे मैंने एक उसको क्या कहते हैं, काइंड ऑफ यू कैन से विजेट, जो लोग यूज कर रहे हैं। तो विजिट था। अब इनिशियली क्या किया, अगर मैं विजिट को बंद कर दूं तो ये कुछ ये दिखना बंद हो जाएगा। बेसिकली द बैकग्राउंड यू कैन क्लिक अपडेट, यू यूज फाइल और समथिंग, आई गेस फ्रॉम द फाइल इट मींस HTML फाइल वेयर यू कैन हैव अ क्लिक। मैंने कभी किया भी नहीं है। Oh yes, so you can, I think it will support a file. Again, I haven't read the documentation properly, but मेरे केस में मुझे लगा कि शायद ये HTML फाइल होगा, और ये HTML allow you to insert always। तो हो सकता है कि HTML फाइल हो, again I have used तो, but हाँ it does allow you to use photos or videos। In my case I've chosen a photo here, basically photos and videos always, and then you can just choose a photo. In this case I've chosen a photo which you see here. This photo which we read about how it goes down, and there is something them read 500 subscribers, and ये सब है क्या वैकेंट लगे हुए हैं। and again how did I know कितना size रखना है? If you go this, if you choose, if you try to add a new overlay, तो basically it will tell you कि क्या size है इसका। So if I click on this, it says कि 4080, if you see here UL के नीचे it says 4080 1080 1080px। that basically means कि तुम्हें इतना ही साइज चाहिए होगा इसका। and then if you see यहाँ पे allow करता है add image files, और एक वो फाइल होता है, फाइल वाले सेक्शन में जाके फाइल उठा लो कि फाइल अपलोड लो। yes, I was wrong. Come back to the widget thing. So basically you see here add HTML overlay, basically तुम, अगर हम taking words talking about words में limits, free limits basically आपको allow करता है कि आप स्कीम एलिमेंट को ओवरले बनाने देना है, प्लस इट लेट्स यू यूज देयर ओवरले जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उनके डॉट कैन। तो वो वाला ओवरलेस एनी वन ऑफ प्रॉब्लम क्या है कि वो आपके टेम्पलेट के पैटर्न है, मतलब राइट थोड़ा सा जो आई ट्राई टू क्रिएट लॉट ऑफ टेम्पलेट्स, आई ट्राई टू क्रिएट सम टेम्पलेट्स एज बेसिकली वो टेम्पलेट्स फ्रॉम स्क्रैच, उसके चीजें काम करती हैं, बट यू नीड टू, आई थिंक यू प्रैक्टिस अ लॉट हाउ टू क्रिएट अ पर and they are called CSS or HTML का combination use करते हो, create those hours। If you understand the things, अगर आप बना रहे हो, then the best, because you can create custom CSS जैसे आपको वेबसाइट पे दिखता है, काफी अच्छा UI UX है, मतलब काफी अच्छा व्यू दिखता है, को अलग एनिमेट उसको डिस्कस होती है। तो ये भी whatever it supports, whatever version of CSS it supports, सारा आप देखिए उसके अंदर। तो अब तक मतलब ये पूरा कस्टमाइजेशन, तो ठीक है it didn't do that all of the but it tried to do basic set initialist किया सब तक, but when let's say में whatever you visit to add you see those just subscribes numbers जो बाहर कर रहे हैं, फिर किसी ने चेक किया तो चैट हो जाएगा नहीं, वो सब बहुत कूल नहीं रहा था because didn't use that advanced setting thing using CSS and HTML। तो ठीक है, it helps you can use elements and you can use, and they once you save that overlay तो तुम्हें एक लिंक देंगे HTML का, just pay that link, you paste it inside this add HTML overlay and you give a name or thing, and then once it's done then it will basically that overlay will be basically on the right wherever you are placing, basically bottom left or digital lesson है where you see this is what I'm thinking about the highlighted है। यस, सो ये तो था वो, लेकिन देन आई रियलाइज इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतने सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। आई शुड ऑल्सो प्लस बिकॉज यू हैव द थिंग हर पूरा टाइम नहीं आ सकते हो। सो बेसिकली आई राइट कि क्यों ना इसमें थोड़ा सा जो किया जाए, दैट्स व्हाई ऑल व्यूअर्स द सीरीज मैसेज यू गॉट। सो आई डिड बेसिकली कैनवा क्रिएट अ कैनवास जिसका मैंने का साइज चूज किया 480 एंड 1080 का, और उसके अंदर मैंने उसको अपनी थोड़ा सा क्रिएटिविटी एंड थोड़ा सा कैन जो को इसकी कैसे से रखना चाहिए, एंड चैनल का नाम वो था तो क्वेश्चन रख दिया, क्वेश्चन आ दिया,
changes in your way. If you change to go camera, generate a make some changes in that photo and then generate a new things. तो वो होगा अभी अदर चीज वेबकैम का सेक्शन में जो कि ये वाला है जो भी मैंने हाइड किया है. Good thing about Stream Champ is that it allows to remote control. So basically remote control means it will give you okay. I hope okay, it's already open. No. So basically if you go to this and if you click this, yeah, this is what I'm talking about. Basically remote control का option मिलता है which you can enable. जैसे मैंने यहाँ पर enable करा है तो it gives you a, which in my case I'm currently which I'll refresh again so that it is not weak and अपनी स्क्रीन क्लिक करे we can do what we want. समझ जाओ कुछ और लाइव स्ट्रीम हो रहा है उसके बाद. तो ठीक है मतलब that's sort of secure things. तो अभी आपने पेयर को if you go stream URL you will basically get a URL जिसको यूज कर रहा है and then you put that remove पेयर कोड उसके अंदर URL के अंदर and you remote you get option where it say remote or you connect your camera so you can connect camera तुम्हारा वो जो हाफ सेटिंग्स यहाँ की जैसे डिफ़ॉल्ट सीन वगैरह या फिर ओरिएंटेशन वगैरह ये सब तुम्हारा वहाँ शो करेगा. तो दैट्स समथिंग बिकॉज तुम कैमरे के साथ एडजस्टमेंट करते हो अपना. तो आई विल टॉक अबाउट सीन्स एंड ऑल दिस थिंग्स बट हाँ अभी के लिए this is how it works. You can choose different what you call it size for your that webcam. So in my case I've chosen 6040 x 360 16:9 जो कि मुझे परफेक्ट लगा एंड बिकॉज आई वांटेड टू फिट दैट होल कैमरा का व्यू इनसाइड अ बॉक्स जो तुम अभी डिस्प्ले सामने देख रहे हो. तो दैट बॉक्स अगेन आई क्रिएटेड इनसाइड कैनवा ओनली एंड देन आई एडजस्टेड माय वेबकैम वाला थिंग जो कि तुम्हें स्ट्रीम चैम से करना पड़ेगा बिकॉज द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस विल हाईलाइट यू कैन मूव दिस बॉक्स इधर उधर. So I basically moved it and you can see now somehow I was able to fit it inside box which is a little better although it's not perfect. It's okay. Again this whole Jugaad and all. Coming to my cam setup, so basically currently I will try to prefer to use my Mac closed in on a charge so I can just save some space on my disk. Plus अगर आपके पास already दो screen you don't need a third screen जो कि screen है रहती. तो and especially when you have a private mobile so it becomes more easy to split and make it 3D monitor basically. So I needed a camera, I have a webcam, Jugaad. If you have a phone I guess I'm not sure about Android, but especially for iOS or basically custom. हाँ again I can't say anything about Android मैंने उसके पास suggest नहीं है. Coming to this iPhone thing, so basically iPhone Auto if you don't have a camera or if you're not working in MacBook, it basically because I logged my iCloud account in both my MacBook, iPad, this क्या कहते हैं iPhone. Basically they're able to sync together, which is a good thing about and that's what we call ecosystem and all. तो क्या हो रहा है कि when let's say आप Zoom call or Google Meet or something, I need a camera because मेरा लैप बंद है तो I can use that camera. So basically iOS macOS they automatically connect to your if you enable that in your phone then it will automatically try to connect to your phone cam and use camera as a web. So मेरे case में currently even this thing my iPad is using that camera only as a webcam. So मेरा phone I don't know how I show it. Basically मैं अभी this is my phone tap here. If you see I'm doing this right now and the phone is used as a camera. Obviously that's a standard and already non-feature of this thing. macOS और iOS and macOS का है hard issue जो भी hardware feature है. Basically you can connect your iPhone your other devices and use the cam. Okay. Since this is how my camera is working and this is how I'm getting a little bit better quality, not actually high definition. I do have a camera which I use but उसमें लेंस 50 mm है और वो if you understand about the camera things and all तो आपको लेंस minimum ये 17 to 30 24 minutes you can keep थोड़ा सा पास में and then you have a wide view. So leave that. This is how my camera is working because नहीं तो वो
can just keep anywhere because it's a phone, I can move it anywhere. It's a portability and that's the stitch and remote यूआर वाला setup that is good. तो वो अच्छे से काम करता है, you understand कि कैसे काम करना है उसके साथ. That's another thing. Then something called scenes जो कि मैं देखा अभी यहाँ पर. Scenes is basically, you can choose custom scenes or you can choose the themes which are provided by StreamChamp. Yes, मैंने कुछ custom themes बनाई हैं, जैसे कि scenes बनाए, जैसे कि if I click to for myself, and then you can choose the standard themes which are provided by StreamChamp, जैसे be right back, away वगैरह वगैरह. तो अगर आप वो चूज करोगे तो you will see that display like be right back or stream away for a moment, provided by powered by StreamChamp वगैरह वगैरह. But because I didn't want that, तो मैंने अपने केस में ये कस्टम चीज़ें बनाई. दिस इज़ गुड, दिस इज़ रियली गुड. मतलब आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि क्या क्या करना है. मतलब बेसिकली काइंड ऑफ ऑब्वियस कि जो हम सीन्स बनाते हैं, ओवरलेस बनाते हैं, वो सारा आपको यहाँ मिल जाता है. एंड अगेन बिकॉज दिस इज देसी जुगाड़, वी आर नॉट यूजिंग सम अच्छे सॉफ्टवेयर जो कि लोग जनरली यूज़ करते हैं. फॉर नाउ द प्लान इज़ टू गो थ्रू, use this stream champ, not spend more money, and keep doing streaming. Because एक चीज़ मैंने notice किया है, a lot of talking about BGMI, not targeting any other gaming games और गेमिंग कम्युनिटी वाले लोगों को. बीजीएम में एक चीज़ देखा है कि देर आर वेरी फ्यू पीपल हु स्ट्रीम एट अ 1440 एंड देन 60 एफपीएस एंड ऑल. तो बहुत ही कम लोग हैं जो करते हैं. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट स्ट्रीमिंग फॉर द सेक ऑफ स्ट्रीमिंग. तो वो लोग का जो वीडियो है काफ़ी पिक्सलेटेड दिखता है. एंड दैट्स द रीज़न आई, that one reason I don't want to currently remove such एक minute, let me go back to the default setting and I'll show you there. So basically I can also do that full screen का streaming वगैरह, but the problem is कि उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, but you will see एक तो stretched होगा screen, and I have to, in that case I'll have to remove. Basically I can show you how to stretch it. If you go back and if you go to icons once again, I don't know if you click this, I'm not able to click. बेसिकली तुमने इस वीडियो वाले सेक्शन को स्ट्रीम कर सकते हो, स्ट्रेच सकते हो, स्क्रीन रहेगा उस पर गाना हटा सकते हो. प्रॉब्लम क्या है कि जब हटाओ तो काफी स्ट्रेच रहेगा. और इधर मिडिल अदर एप्स अलाउ करते हैं नॉट यूज साइड वाला थिंग और समथिंग समथिंग. प्रॉब्लम क्या है इसमें कि बहुत ही एक तो 1080p पे लेते हैं वो लोग, तो अलाउ नहीं करते 1080 से ज़्यादा स्ट्रीम करने को, क्योंकि मुझे लगता है कि होना चाहिए. और क्योंकि वीडियो की क्रिस्प है और काफ़ी वीडियो करंट मिली की क्रिस्प होती है. That one which, so I'm not basically trying to दूसरे लोगों को बताने के लिए कैसा वो वाला नहीं कर. basically I'm saying कि वीडियो शूट कर बेटर देखनी चाहिए in terms of अगर आप स्ट्रीम कर रहे हो. that's why I'm compromising myself on side layout कि मैं उसको ज़्यादा अच्छा रखूँ और वीडियो छोटी जगह रखूँ. try to try and keep it more better space है और better view है और दिखने लगे कि हमारी क्वालिटी ऐसा ना एकदम अच्छा दिखे. So that is one thing, that one of the reason this layout type पे जब तक figure out better software we can dream do a streaming these hardware OBS live stream elements वगैरह से. तो for now this is setup, this I've done. I'm pretty sure now it's watching. So if somebody watches it, oh oh I just checked that जिन लोगों ने रवि किया है. So that's a thing, friends supporting. This is a good. Yes, coming back to this. तो ये सब है
works, so I'll be able to charge my MacBooks while I'm streaming. So it's another thing which will be implementing soon. So I was told, I need to do a bit here and also while I'm doing stream, which I am. So ठीक है, that's all that I wanted to say. That's all I wanted. I basically the Jugaad app, and this was I'm trying to make the most out of what I have, right? And we can do infuse changes so we can stream the सारा कुछ जो I don't think there's anything else to it. The camera is doing fine. I'm using a phone camera. I need to buy something new because we're already phone. iPad है या फिर I'm not sure कि